हेलो SBI PO एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू EduTab। सो गाइज अब इस वीकेंड पे आपका SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है एंड आई एम श्योर यू आर डन विद योर प्रिपरेशन। और इस मोमेंट पे अभी इस टाइम पे आपको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? रिगरस प्रैक्टिस। तो गाइज इसीलिए हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए दो दो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो अभी कल हमने इंग्लिश का टेस्ट 1 किया था। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट 2। तो गाइज ये पूरा आपका एग्जैक्ट सिलेबस पे बेस्ड होगा। उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा जो आपके एग्जाम में होता है। और वही अपडेटेड डिफिकल्टी लेवल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट को पूरा एंड तक लीजिएगा, अपने क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करिएगा। और एंड में मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने गलत हुए। ठीक है? तो दिस इज लाइक अ मॉक टेस्ट फॉर यू। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का इंग्लिश टेस्ट 2। तो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया। वैसे गाइस मैंने आपको कल वाले टेस्ट में भी बताया था कि हम सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कभी भी जंप नहीं करते। हम पहले छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में जो सिंगल लाइनर वाले हैं, जैसे एरर डिटेक्शन, सिंगल फिलर, डबल फिलर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स, ये वाले क्वेश्चन। और फिर आएंगे हम बड़े क्वेश्चंस पे। ठीक है? जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ये एंड में करने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में करना है। छोटे क्वेश्चन से फिर बड़े क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है? पर चले यहाँ पे हम सीक्वेंशियली करते हैं। तो पहले कॉम्प्रिहेंशन करते हैं सॉल्व। कहीं हमें पैसेज दिया हुआ है और इसके ऊपर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए, तो इनको करने का तरीका क्या होता है इस कॉम्प्रिहेंशन को? रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग क्या होती है? पहले क्वेश्चंस पढ़ो और फिर अपने पैसेज साथ साथ पढ़ना। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सपोर्टेड बाय द पैसेज, ये पढ़ के समझ आएगा। How does the passage suggest the collapse of FTX will impact the long-term future of cryptocurrency? कि FTX के कोलैप्स से क्रिप्टो करेंसी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमें ढूंढना है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज फेसिंग द क्रिप्टो करेंसी मार्केट आफ्टर द FTX कॉम्प्लेक्स? कि FTX कॉम्प्लेक्स कोलैप्स के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रही है? तो इम्पैक्ट क्या होगा, चैलेंज क्या फेस कर रही है। ठीक है? हमें ऑपोजिट बताना है डाउनफॉल का, हमें सिनोनिम बताना है स्क्रूटनाइज का। फिर उसने क्वेश्चन 4 दिया है, व्हाट कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये पढ़ के समझ आएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, ये भी पढ़ के ही समझ आएगा। द फ्रेज बेस्ट कंप्लीट द पैसेज, एक ब्लैंक दिया हुआ है वो हमें ढूंढना है। और बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ द FTX कॉम्प्लेक्स। इम्पैक्ट ऑफ द FTX कॉम्प्लेक्स हमें ये बताना है। चलिए, तो कुछ FTX कॉम्प्लेक्स के ऊपर पैसेज है, पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। In 2023, the sudden collapse of one of the largest cryptocurrency exchanges, FTX, shocked the global financial markets. FTX, once a dominant player in the world of digital assets, had built its reputation on offering a wide array of crypto services, including trading, lending, and even a unique platform for new projects. The exchange's founder, Sam Bankman-Fried, had become a celebrity in crypto space, often touted as the face of responsible and ethical crypto business practices. However, in early 2023, an investigation revealed massive financial mismanagement and fraud within the company, leading to its swift downfall. So there was a fraud within the company which led to its downfall. The collapse sent shockwaves through the crypto world, with investors losing billions of dollars in what was described as one of the most significant financial scandals in the recent years. Regulatory bodies across the world, including the US Security and Exchange Commission (SEC) and the European Central Bank (ECB), began to scrutinize the crypto industry more rigorously. So what happened? What was the impact? The crypto industry was scrutinized. The incident raised important questions about the lack of oversight in the largely unregulated cryptocurrency market. Lack of oversight in the largely unregulated cryptocurrency market. Many investors, both individual and institutional, were left reeling as their investments had evaporated almost overnight. The failure of FTX not only tarnished the reputation of cryptocurrency as a whole, but also not only tarnished the reputation of the cryptocurrency, but also sparked calls for more stringent regulations and consumer protections. In the aftermath, the price of Bitcoin and other major cryptocurrencies plummeted, causing a ripple effect in the broader digital asset ecosystem. Some experts argue that this collapse may mark the end of the Wild West era for cryptocurrencies.
leading to a more regulated and transparent market. So it will end the monopoly of Wild West and it will lead to a more regulated and transparent market. Others, however, fear that the loss of trust in digital currencies will hinder their mainstream adoption इन द कमिंग ईयर्स. तो एक हमें लास्ट लाइन हमें बतानी है यहाँ पे क्या होनी चाहिए. तो चलिए गाइस अब सॉल्व करते हैं कैसे पैसेज. Based on the passage, which of the following most accurately describes the impact of the FTX complex? It solely affected individual investors with minimal impact on institutions? No. It had no significant effect on the price of Bitcoin? No. It caused a loss of trust in cryptocurrency market and sparked calls for more regulation? Yes. It resulted in immediate recovery of the cryptocurrency market? No. It led to the complete abandonment of cryptocurrency investments? No. Correct answer is option C. It caused a loss of trust in the cryptocurrency market and sparked calls for more regulation. Second, which phrase best completes the blank in the passage? The event could potentially accelerate the development of safer and regulatory markets. This marks the final blow to the cryptocurrency market as we know it. The aftermath of FTX collapse will likely go unnoticed by the general public. Many analysts believe that cryptocurrency market will recover but at a much slower pace. So last line जो हमें blank था उसमें क्या था? पहले उसने बोला some experts argue that this collapse may end the of the Wild West era for cryptocurrencies, leading to more regulated and transparent market. Others, however, fear that the loss of trust in digital currencies will hinder their mainstream adoption in the coming years. तो दूसरों का मानना है कि डिजिटल करेंसीज को लॉस ऑफ ट्रस्ट झेलना पड़ेगा in the coming years. So this event could potentially accelerate the development of a safer and regulatory crypto market. Yes. So दोनों ही हाल में क्या होगा, अगर लॉस होगा तो भी, नहीं होगा तो भी क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेफर एंड रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स तो होगा ही होगा, जो उसने मेंशन भी किया है. तो ऑप्शन ए was your correct answer here. Next, which of the following statements is false? Okay, FTX was once considered a dominant player. It's correct. है. The collapse of FTX led to significant losses for both investors and individual investors. Yes. The FTX downfall was caused by external market forces beyond the company's control. नहीं. It was done because of the fraud within the company. हमने underline किया था ना. So this is wrong. The collapse of FTX sparked a major conversation about increasing regulation. ये तो था. Cryptocurrencies prices including Bitcoin dropped after ये भी था. तो correct guys, जो false है वो option C है. FTX's downfall was caused by external market forces beyond the company's control. No, it was mentioned. ये देखो first line, first paragraph में तो मैंने underline किया हुआ है. Fraud within the company, mismanagement and fraud within the company leading to its downfall. चलिए question number 4. What analytical conclusion can be drawn from the passage regarding the future of cryptocurrency? The collapse of FTX may lead to more stringent regulations and oversight in cryptocurrency market. Correct है. Cryptocurrency will soon become fully regulated and mainstream, not fully regulated. But there will be more stringent and oversights, more stringent norms and oversights. The failure of FTX will have no long-term effects on the cryptocurrency. No guys, only first was correct, so option A is your correct answer here. चलिए next question, which of the following is the synonym of scrutinize? Scrutinize होता है guys किसी चीज को check में रखना, मतलब उसको कंट्रोल में रखना, ओवरसाइट रखना. तो इग्नोर करना नहीं, एग्जामिन केयरफुली यस, रेगुलेट नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, अप्रूव नहीं, एग्जामिन केयरफुली इज द राइट आंसर, स्क्रूटनाइज. और डाउनफॉल का उसने ऑपोजिट बताया है. डाउनफॉल का राइज, सक्सेस, कोलैप्स, रिसेशन, फेलियर, ये तीनों तो उसके सिनोनिम हो गए. राइज या सक्सेस गाइस, डाउनफॉल अगर मतलब ऑन द मूव गिर जाना है तो राइज सिर्फ ऊपर बढ़ना नहीं है, सक्सेस होगा. आई थिंक कि डाउनफॉल अगर उसमें नुकसान है तो सक्सेस उसमें बेनिफिट है. अब डाउनफॉल का आप लिटरल मीनिंग राइज सोच रहे होगे, बट डाउनफॉल का यहाँ मतलब क्या था, एफटीएक्स के मार्केट शेयर गिर जाना. अब मार्केट शेयर को गिरने का ऑपोजिट क्या होगा, सक्सेस हो जाना. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, the most significant challenge facing the cryptocurrency market after the collapse: the need to develop more user-friendly digital wallets, the increase in interest from institutional investors, the lack of regulation and oversight within the cryptocurrency market, yes, the decline in the popularity of blockchain, no, expansion of cryptocurrency to developing, or no. Option C is the correct answer. What is the challenge? The lack of regulation and oversight within the cryptocurrency market. Next, how does the passage suggest the collapse of FTX will impact the long term of it will likely to lead
The collapse of all cryptocurrency, no. It will trigger a shift towards more traditional financial systems, no. It will prompt further advancements in blockchain technology. It will lead to stricter regulations and potentially more trustworthy cryptocurrency system, yes. And it will have minimum impact, no guys. Option D is the correct answer. It will lead to stricter regulations and potentially a more trustworthy cryptocurrency ecosystem. Next question, guys. Which of the following statements is supported by the passage? The collapse of FTX was an isolated event that did not affect others? No. Collapse of FTX has led to loss of trust in cryptocurrency, which may require increased regulation. Yes. Cryptocurrency markets are thriving and no major regulatory changes. No. FTX collapse has caused a decline in the adoption. No. The collapse did not affect the institutional investors. No. Guys, option B is the correct answer. The collapse of FTX has led to a loss in trust in cryptocurrency, which may require increased regulation. So this was your comprehension, and this is how you solve comprehension in one go. ठीक है, रिवर्स रीडिंग याद रखना गाइस. चलिए नेक्स्ट है हमें, अच्छा क्लोज टेस्ट दिया है हमें, तो हमें पढ़ना है और फिर इसमें बताना क्या सही उसमें होना चाहिए. तो पहले एक बार पढ़ते हैं गाइस फटाफट से इन्हें सिग्निफिक, ताकि हमें मतलब उसका अंडरलाइंग थीम और हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए, टोन पता चले. In a significant shift in global economic policy, the International Monetary Fund (IMF) announced in its early 2025 that it would adopt new measures to address growing economic inequality across developing nations. The announcement, which was welcomed by numerous global leaders, came at a time when many countries were grappling with the impact of inflation, unemployment, and debt. While the initiative was seen as a potential game changer for countries struggling to recover from financial crisis, it was also met with skepticism from certain political factions and financial experts who questioned its dash. Okay. The IMF's decision was based on a comprehensive study that highlighted the deepening divide between wealthy and low-income countries exacerbated by the effects of globalization and the pandemic. This new approach, which includes the provision of low-interest loans, debt relief for poorest nations, which was hailed as a breakthrough in the international financial cooperation. However, critics of the plan argued that it could lead to a rise in dash on foreign aid, undermining the economic sovereignty of the nations it aimed to assist. Moreover, some feared that IMF's role in this initiative would inadvertently increase its dash over domestic policies, particularly in countries with fragile political systems. As discussions unfolded across international forums, several developing countries expressed concern that the plan might inadvertently favor larger economies with more robust political structures, leaving smaller nations with dash. Despite these concerns, proponents of the new measures contended that the initiative would serve as a dash step towards global financial stability and reduce long-standing inequalities. Okay. तो blank number 10 देखते हैं guys. While the initiative was seen as a potential game changer for countries struggling to recover from the financial crisis, it was also met with skepticism from certain political factions and financial experts who questioned its dash, who questioned its feasibility, ambiguity मतलब confusing है, popularity नहीं, effectiveness या रेजिलियंस नहीं गाइस. इफेक्टिवनेस आएगा, फिजिबिलिटी कि ये कितना, अब उसने इफेक्टिवनेस की कितनी इफेक्टिव होगी या कितनी फिजिबल है, प्रैक्टिकली वायबल है. तो द करेक्ट आंसर हियर इज फिजिबल. इफेक्टिव होना ना होना वो तो बाद में पता चलेगा ना, फिजिबिलिटी देख रहे हैं, प्रैक्टिकली वो फिजिबल है या नहीं है. तो इट शुड बी हु क्वेश्चन इट्स फिजिबिलिटी. नेक्स्ट है ब्लैंक नंबर 11. However, critics of the plan argued that it could lead to a rise in dash on foreign aid. It could lead to a rise in dash on foreign aid. It could lead to a rise in dependence on foreign aid. Independence, no. Flexibility on foreign aid, no. Security on foreign aid, no. Equity on no, dependence. It would lead to a rise in dependence on foreign aid, undermining the economic sovereignty of the nations it aimed to assist. Moreover, some feared that IMF's role in this initiative would inadvertently increase its dash over domestic policies. It would increase its dash over influence over, confidence over, instability over, autonomy over, या pressure over. Pressure या influence ही हो सकता है. Influence is the better word here guys. वो pressure तो नहीं करेंगे, influence उनका बढ़ जाएगा. तो I think influence is the right word. It would increase its influence over domestic policies, particularly in countries with fragile political systems. And next blank.
As discussion unfolded across international forums, several developing countries expressed concern that the plan might inadvertently favor larger economies with more robust political structures, leaving smaller nations with dash, leaving smaller nations with representation, isolation, recognition, एडवांटेज एम्पावरमेंट नहीं गाइस, एक ही नेगेटिव वर्ड आइसोलेशन, ये बड़ी इकोनॉमीज को फायदा मिलेगा, छोटी अकेली रह जाएंगी, तो इट वुड लिविंग स्मॉलर नेशंस विद isolation. And last, despite these concerns, proponents of the new measures contended that the initiative would serve as a dash step towards global financial stability. It would lead to critical step, marginal तो होता है थोड़ा सा, temporary step, significant step या neutral step. Critical step, yes, I think guys it would be significant, not critical. The significant is the better word क्योंकि वो उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो it would serve as a significant step towards significant step towards global financial stability. So your correct answers are marked here. You can look into them. चलिए next question करते हैं. In the following questions, 5 sentences are given. You have to rearrange these sentences to make a contextually मैंने आजा पैराजम्बल आया है, तो इसको पढ़ते हैं गाइस. कैसे सॉल्व करना है, हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम अपने ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले देखो किस किस सेंटेंस में प्रोनाउन है और कंजंक्शन है ताकि हमें फर्स्ट सेंटेंस मिले. द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, facilitating instant connections through social media, emails and messaging platforms. Correct. However, despite its benefits, ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस. While it has provided, ये भी नहीं हो सकता. The internet's growth can be traced back to the late 20th century when the advent of personal computers and early communication networks paved the way for creation of what would eventually become the World Wide Web. As the technology continues to advance, ये भी नहीं हो सकता. So A या D में से ये guys. इंटरनेट इज रेवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट. पहले गाइस देखो हमेशा बैकग्राउंड दिया जाता है, तो डी इज द बेटर आंसर क्योंकि 20th सेंचुरी स्टार्टिंग की बात करें कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे आया. तो फॉर मी फर्स्ट सेंटेंस इज डी. तो डी से कौन से ऑप्शन है जो नहीं है, अच्छा 3 ऑप्शन है, डी ए और डी सी. डी के बाद सी आ सकता है. While it has provided unparalleled opportunities for education, business, नहीं सीधा यहाँ नहीं आएगा. आई थिंक डी के बाद ए आना चाहिए. कॉन्टिन्यूटी वहीं से बन रही है ना, चेन वहीं से कनेक्ट बन रही है. पहले उसने बोला कि इंटरनेट कैसे बना 20th सेंचुरी में, फिर उसने क्या किया, द इंटरनेट इज रेवोल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब. सो ऑप्शन ई भी एलिमिनेट हो गया. एंड फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट कनेक्शन थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल्स एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स. अब डी ए के बाद बी या ई. However, despite its benefits, the internet also raises concerns. Yeah, as technology continues to advance, the role of the internet is shaping. The society will only grow more prominent. So, raising important questions about its impact on future generations and ethical considerations that come with it. ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है. मेरे ख्याल से डी ए के बाद क्या आना चाहिए. डी ए के बाद बी या ई. नहीं गाइस, ए तो सेकंड है, तो डी. अच्छा, डी के बाद बी दिया हुआ है इसमें, यहीं से एलिमिनेट होगा. ये रहा आपका करेक्ट आंसर गाइस. डी के बाद ए के बाद फिर आना चाहिए बी. हाउएवर डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स द इंटरनेट आल्सो रेजेस कंसर्न रिलेटेड टू प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी. फिर आ गया ई. एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, द रोल ऑफ इंटरनेट शेपिंग सोसाइटी विल ओनली ग्रो मोर प्रोमिनेंट, रेजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट its impact on future generations and ethical considerations. And last, while it has provided unparalleled opportunities for education, business and entertainment, it has also led to digital divide, leaving many people in the rural or underserved areas without reliable access to technology on the internet itself. So D, A, B, E and C. So yes, option A is your correct answer. अब इसके बाद बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे गाइस. अच्छा ए डी ए बी ई सी. सो थर्ड होना चाहिए आपका बी. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. फर्स्ट होना चाहिए आपका डी. सो अगेन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. देन लास्ट होना चाहिए आपका, हमें लास्ट ढूंढना है और फोर्थ ढूंढना है. तो लास्ट है हमारा सी और फोर्थ है ई. तो लास्ट सी और फोर्थ है ई. सो ऑप्शन ई, बोथ द क्वेश्चंस वर द राइट आंसर.
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस और सेंटेंसेस गिवन विद एन एरर, आइडेंटिफाई द एरर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स इट. अच्छा, तो एरर डिटेक्शन आया, एक सेंटेंस को हमें देखना है कि इस पार्ट में एरर है. चलिए गाइस सॉल्व करते हैं. Question number 20. The management had decided that each department should submit their progress reports by the end of the month, so that the overall performance can be evaluated and strategies for improvement can be developed. Guys, ये each वाले वर्ड मेरे को दिख जाते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने अच्छे से किया है तो ये वर्ड दिखते ही समझ जाना इनके बाद वर्ब क्या रहेगी, या कोई भी प्रोनाउन अगर यूज होगा तो वो क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर. सो द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड दैट द ईच डिपार्टमेंट शुड सबमिट देयर प्रोग्रेस या इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट. तो यहाँ पे देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की जगह इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा. तो यहाँ पे शुड सबमिट सबमिट इट्स रिपोर्ट, ये देखो ये रहा. यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. तो नॉट देयर, क्योंकि ईच सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा. तो सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, या इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Although the company had promised to deliver the products within the specified time frame, the logistics issues which were unforeseen and beyond their control had caused substantial delays, leading to significant customer dissatisfaction. Although the company had promised, the logistical issues which were unforeseen, ठीक है, had caused substantial delays. So I think ये तो ठीक लग रहा है. Although the company had promised to deliver products within the specified time frame, the logistics issues. हाँ जी, अच्छा, ये इसमें वो वाला आ रहा है कि अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पे हैड कॉज नहीं आएगा, फिर ये सिर्फ हमें V2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हैड आ चुका है. देखो, ऑल्दो द कंपनी हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, द लॉजिस्टिक्स इश्यूज which were unforeseen and beyond their control, had caused की जगह सिर्फ caused आएगा, cause substantial delays leading to significant customer. क्योंकि देखो, पास में जब दो अलग अलग टाइम के सेंटेंसेस बोले जाते हैं ना, कि हालांकि कंपनी ने पहले प्रॉमिस किया था लेकिन बाद में वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो जो पहले सेंटेंस होता है उसको रखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको रखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में. सो यहाँ पर हैड कॉज्ड वाला है. हाँ, ये रहा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. करेक्ट गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. The project manager ensured that every team member would be assigned specific tasks and the resources would be distributed accordingly. But due to unforeseen technical challenges, the project's timeline had to be revised multiple times. The manager ensured that every team member would be assigned specific tasks and the resources would be distributed accordingly. But due to unforeseen technical challenges, the project's timeline. अच्छा, इसमें गलती गई, हम नॉन लिविंग चीज़ों में अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं गाइस. बट प्रोजेक्ट कोई नॉन लिविंग चीज़ भी तो नहीं है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है वो तो. द प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन हैड टू बी रिवाइज्ड. नहीं गाइस, इसमें कोई एरर नहीं है. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अच्छा, तीन सेंटेंसेस दिए हैं, हमें ये बताना किस सेंटेंस में एरर है. ओके. The team has decided to delay the project's launch due to the ongoing supply chain issues that were unexpected. The team has decided to delay the project's launch due to the ongoing supply chain issues that were unexpected. Okay. Although the management did not anticipate any disruptions, it became clear that the delays in delivery would affect the overall timeline. Okay. The new strategy which was formulated to address these setbacks were गलत है, यहाँ पे was आएगा. तो पहले 1 और 2 में देखते हैं इसमें कहीं एरर है. तो 3 में तो एरर है गाइस क्लियरली. तो the team has decided to delay the project's launch due to the ongoing supply chain issues that were unexpected. ये करेक्ट है. Although the management did not anticipate any disruptions, it became clear that delays in delivery would affect the overall timeline. ये भी करेक्ट है गाइस. So only sentence 3 में एरर है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फिर से मैं बताने की सेंटेंस में एरर है। द कमेटी रिव्यूड all the documents carefully and concluded that the proposed changes were necessary to improve the process. Correct है. However, they had overlooked the previous report that contained critical data which could have prevented such a decision. Okay, and in spite of it, they decided to move forward with the changes, unaware of the political risks that could arise. Guys, मुझे तीनों ठीक लग रहे हैं यहाँ तक. फिर पढ़ लेते हैं एक बार. The committee reviewed all the documents carefully, correct, and concluded that the proposed changes were necessary to improve the process. However, they had overlooked the previous report that contained critical data which could have prevented such a decision. Okay? And in spite of it, they decided to move forward with the changes, unaware of the potential risks that could arise. Correct तीनों ठीक है guys. No error है. Option A is your correct answer. चलिए next question. फिर से वही है. The professor's lecture on climate change highlighted the alarming rate at which the global temperature is increasing. The professor's lecture on climate change highlighted the alarming rate at which the global temperature is increasing. Correct है. Despite the alarming data presented, the audience showed little concern or urgency regarding the situation. ये भी correct है. Many attendees who were experts in environmental studies have argued that more immediate actions need to be taken to avoid irreversible damage. More immediate actions या immediate actions need to be taken. They have argued that more immediate actions नहीं, immediate actions होना चाहिए यहाँ पे. More comparison में होता है ना, और comparison यहाँ किसी से है ही नहीं. तो error in sentence 3 only. Option D is the correct answer. चलिए अब नेक्स्ट क्या है गाइस. A word has been given in each question and has been used in the sentences given below. Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner. अच्छा, एक वर्ड दिया हुआ है, हमें बताना है कि किस सेंटेंस में ठीक है या किस सेंटेंस में गलत है. अगर सब में गलत है तो फिर none of these is would be your answer. चलिए, परप्लेक्स. परप्लेक्स का मतलब क्या होता है गाइस? कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज हो जाना. ठीक है, कंफ्यूजिंग. So the instructions were so confusing that they completely perplexed me. Correct है ये. He was perplexed होना चाहिए था. पर देखो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, सिर्फ कॉन्टेक्चुअली नहीं. तो ये गलत हो गया. ही वॉज परप्लेक्स्ड होना चाहिए था. एंड द सडन चेंज इन द वेदर परप्लेक्स्ड द इंटायर सिटी. के एकदम से जो मौसम बदल गया उससे सारा का सारा शहर कंफ्यूज हो गया. यार मौसम बदलने से पूरा शहर कंफ्यूज होता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है. विच परप्लेक्स्ड. आई थिंक परप्लेक्स का मतलब सिर्फ कंफ्यूज ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता. देखो कंफ्यूज तो होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा और कोई मीनिंग? कंफ्यूज और लीव एट लॉस या मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड. किसी को और कॉम्प्लिकेट नहीं गाइस, कॉम्प्लिकेट कर देना या कंफ्यूज कर देना वो डज नॉट मेक सेंस हियर. सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विविड. विविड इज गाइस वेरी ब्राइट, कलरफुल, मतलब क्लियरली आई कैचिंग, उसको बोलते हैं विविड. So the artist's vivid description of the scene brought the painting to life. Yes. The vivid colors of the sunset made the evening truly beautiful. Correct. The vivid movie was an excellent example of classic cinema. नहीं guys, ये गलत है. So only 1 and 2. Option D is your correct answer. चलिए next question. Abundant. Abundant का मतलब क्या होता है? Which is मतलब जो बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है. ठीक है, मतलब abundantly available. So the forest was abundant with wildlife, making it a popular destination for tourists. Correct. The shop had an abundant collection of rare coins on display. Okay. Despite having abundant time, he was unable to finish the project. नहीं, ये बी वाला मुझे गड़बड़ लग रहा है गाइस. ये गड़बड़ लग रहा है. अबंडेंट कलेक्शन, अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स बहुत ज़्यादा डज नॉट मेक सेंस सर. हाँ ये ठीक है. डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट टाइम ही वाज अनेबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट. ये ठीक है कि भाई ज़रूरत से भी ज़्यादा, मतलब जब मोर देन सफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं अबंडेंट. तो आई थिंक 1 and 3 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसमल. डिसमल होता है बहुत ही दुखमय, मतलब दुखदाई, मतलब दुखी, डार्क, ग्लूमी. So the weather was dismal with constant rain and grey skies throughout the day. हाँ मतलब डार्क और ग्लूमी भी होता है और दुखमय भी होता है. तो her dismal effort to complete the task on time was disappointing to the team. Dismal effort
नहीं गाइज ये ठीक नहीं है. द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम लेड टू एन अर्ली एग्जिट, हाँ ये करेक्ट है, मतलब पुअर, वेरी सैड. सो 1 and 3, यस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. चले गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या है? द इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस बिलो 5 words आर अंडरलाइन. दीज 5 words मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन. सो कॉम्बिनेशन बताना है हमें. अच्छा, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आएगा इस. चलिए. द रिसर्चर्स बिहेवियर इन ह्यूमन एनालिसिस, the researchers' behavior in human analysis was focused on understanding how perceptions influence social patterns of individuals. The researchers' analysis in human behavior होना चाहिए मेरे ख्याल से. So this should be A. The researchers' analysis in human behavior was focused on understanding how perceptions influence social patterns. How influence, how patterns influence social perceptions. नहीं guys, how perceptions influence social patterns of individuals. Social perception नहीं, social pattern ठीक है. तो only A with B होना चाहिए. Option A is your correct answer. बाकी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे. Next question guys. The country's economic hindered नहीं. Economic growth, economic affected, economic नहीं guys. Economic chain नहीं. So I think ये होना चाहिए. The country's economic growth was hindered by global supply affected नहीं. Global supply chain होना चाहिए. So this should be C. Global supply chain disruptions and inflationary pressures that affected key industries. So this should be E. So A with B and C with E. A with B, C with E. Yes, option B is your correct answer. Next question, guys. The CEO has promised concern ensuring measures work. ये promise ठीक है. To address the concerns of the employees, ये भी ठीक है. Ensuring that appropriate measures will be taken to improve work culture and retention. No rearrangement is required. Sentence is correct as it is. So option D is your correct answer. And question number 33. The university has theoretical a new program. Enhance interdisciplinary seeks launched होना चाहिए guys. The university has launched a new program to enhance students interdisciplinary collaboration which seeks to bridge the gap between theoretical learning and practical experience. So only A with E to enhance students interdisciplinary. बिल्कुल correct है. So only A with E was required. So option E was your correct answer. चलिए guys next question पे चलते हैं. Next है, for each question you will be given an idiom or phrase used in a sentence. Your task is to select the option which best describes the meaning of the given idiom. तो सही meaning क्या है idiom का वो बताना. चलिए, तो his arguments were so full of smoke and mirrors that no one could make sense of his true intentions. So smoke and mirrors का मतलब क्या है? मतलब वही धोखा देना. So a tactic used to deceive or mislead others. Yes. A highly effective plan or strategy. No. A situation involving intense heat and pressure. No. Clear and straightforward explanation. No. A plane that is both difficult and risky. नहीं guys, option A is your correct answer. A tactic used to deceive, मतलब smoke and mirrors, मतलब धुएं में और शीशों के सामने गायब कर देना, मतलब झूठ बोल देना बेसिकली. डिसीव करना, मिसलीड करना. तो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर. Next guys, after working for hours on the project, it was a slap on the wrist when they were told to work when they were told the work was not up to standard. So it was a slap on the wrist. A mild or lenient punishment, a very harsh punishment, physical injury caused by careless mistake, नहीं. Warning that has no serious consequences, या a gesture of appreciation for hard work, नहीं. Guys देखो, slap on the wrist होता है. रिस्ट पे अगर स्लैप करोगे तो क्या कोई दर्द होगा, कोई पनिशमेंट मिलेगी? नहीं गाइस. सो इट वाज अ माइल्ड और लीनियंट पनिशमेंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन, योर करेक्ट आंसर. नहीं नहीं, स्लैप ऑन द रिस्ट वार्निंग नहीं होता. अगर आप सोच रहे हो कि सर ऑप्शन डी तो नहीं है, नहीं, वार्निंग नहीं होता स्लैप ऑन द रिस्ट. स्लैप ऑन द रिस्ट होता है किसी को कुछ ज़्यादा, मतलब पनिशमेंट ना मिलना, थोड़ी बहुत कह के और छोड़ देना. सो दैट्स योर स्लैप ऑन द रिस्ट. ऑप्शन ए वाज करेक्ट. Next, guys, a politician's speech was filled with a red herring designed to divert attention from the real issues at hand. तो red herring का मतलब क्या होता है guys? A clear and persuasive argument, a misleading clue or distraction, a solution that solves the problem directly, a passionate plea for change, या deep and insightful revelation. तो guys, it was filled with a red herring designed to divert attention. Attention divert करेंगे तो it's a misleading clue or it's a distraction. So that's option number B. तो
जब असली इशू से ध्यान भटकाना हो तो मिसलीडिंग क्लू या मिसलीडिंग डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो दिया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड अ रेड हेरिंग. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस गिवन विद 4 वर्ड्स अंडरलाइंड इन ईच. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड रिप्लेस ईच अदर टू फॉर्म, फिर से वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए हैं. चलिए, तो द राइटर्स सीमलेस नॉवल, कंपेलिंग नॉवल होगा, सीमलेस नॉवल थोड़ी होगा. कैप्टिवेटिंग नॉवल हो सकता है, सीमलेस नॉवल हो सकता है, देखते हैं. वॉज प्रेज फॉर इट्स सीमलेस नैरेटिव, कैप्टिवेटिंग की जगह सीमलेस इंटीग्रेशन of diverse perspectives. It's compelling narrative and profound themes. The writer's seamless novel नहीं, compelling captivating, compelling novel होता है मेरे ख्याल से यार. Compelling novel was praised for its seamless narrative. Um, yes, profound themes and the captivating integration of. A with B होना चाहिए. Captivating integration of diverse perspective नहीं है, तो option B, A with B is the correct answer. Captivating themes and profound integration नहीं, A with B is correct. चलिए, the conference was a great success with insightful presentations, dynamic discussions and extensive networking opportunities. So it was a great success, ये तो correct है, with insightful presentations, dynamic discussions and extensive discussions and dynamic networking opportunities. नहीं गाइस, सी विद डी है, यस. सो एक्सटेंसिव डिस्कशन, डायनामिक डिस्कशन में एक्सटेंसिव डिस्कशंस होता है, सो दिस शुड बी डी एंड दिस शुड बी ई. एंड डायनामिक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, सो सॉरी, सी विद डी, मैं ई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सी विद डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज फिल्ड विद एक्सटेंसिव डेटा एंड रिच इंसाइट इनटू हिस्टोरिकल इवेंट्स, was structured in a way that offered both comprehensive and depth. Clarity and depth होना चाहिए guys, ये not comprehensive and depth. Extensive, हाँ, तो it should be clarity and depth, helping the students to develop a comprehensive understanding. Yes, so this should be of the subject. So CVD है, yes, option A is your correct answer. Our last question for today. Despite the significant advancements in technology, the company struggled to adapt to the ever-changing market demands, resulting in many growth and loss of slow, yeah, resulting in a slow growth and the loss of many valuable clients. Yes. So again, C with D is the correct answer. Option A is the right choice. तो ये था गाइज आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर योर SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम. आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड. तो अपना स्कोर जो है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और गाइज अगर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट चाहिए और डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट चाहिए अपने एग्जाम के लिए, यू कैन ज्वाइन आर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स. इसमें आपको पहले तो सभी सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी प्री रिकॉर्डेड प्रीलिम्स और मेंस के लिए. करंट अफेयर्स पिछले एक साल से अपडेटेड और एग्जाम डे तक अपडेटेड मंथली कंपाइलेशन के साथ मिलेगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का आपको पूरा कंपोनेंट मिलेगा. SBI वाला भी, IBPS वाला भी, साथ में फॉर्डर मटेरियल भी होगा उसमें. कंप्यूटर क्लासेस होंगी, मिनी मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है. आप कैसे एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेज में? बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस, आपको बस क्या करना है, आई विल जस्ट टेक 30 मोर सेकंड्स. वैसे तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बट आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज. इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और नीचे आइए और ये रहे आपके कोर्सेज. तो गाइस पहले तो आपका ये 2 डे डेमो कोर्स है जो 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको. 2 दिन के लिए आप कोर्स को पूरा यूज़ कर सकते हो, हर जितनी चाहो उतनी वीडियोस देख सकते हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई का चार्ज नहीं है. एंड देन यू कैन डिसाइड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू. अगर आपको लगता है देन यू कैन जॉइन अस. हमारे पास ये 2 कोर्सेज है, कॉम्बो कोर्स है. एक तो आपके रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंकिंग एग्जाम वाला, जिसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी जैसे RBI और बैंकिंग दोनों के कंपोनेंट्स मिलते हैं, और ये है सिर्फ बैंक के लिए बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स. इन कोर्सेज में आपको कई कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी. हर चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विजेज, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, GD प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलता है. तो अभी कॉम्बो कोर्स पे हम 74% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज सुपर74. और बैंकिंग महापैक पे हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज बैंक70. So come join us.
streamline your preparation, and make your journey constructive and fruitful for yourself. So thank you once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. अगर आपको कोई doubt या कोई query रह जाए, please feel free to call us on this number during the office hours, which is 81462 07241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you so much, guys. I wish you all the very best for your exam, and stay calm, stay poised, and don't panic in the exam. Just take it, you know, just as a mock test, कि जैसे हम मॉक टेस्ट में करते थे ऐसे ही हमें यहाँ परफॉर्म करना है. कोई जजमेंट नहीं लेके जाना. जजमेंट लेके जाओगे पैनिक करोगे और फिर गलतियाँ होंगी. तो enjoy करो उसको, पैनिक नहीं करना. Stay calm and execute the strategy that you have built up over a period of time. So all the very best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you again. Have a good day, and we wish you all the very best for your prelims exams. So see you on the exam day. Thank you very much, guys.